So we have a miracle. We have a miracle, and India has drawn this series 2-2. Mohammad Siraj, yeah, hats off to the DSP. I mean, the way he started off in the first over he bowled today, he picked up Jamie Smith. Second over he bowled today, he picked up uh, Jamie Overton. Third over, it was kind of, I think he gave away just one run. And then the fourth over, he came back and picked up the last wicket. That's Gus Atkinson. ऑब्वियसली हम आगे जाकर शाम को आज ऑब्वियसली मैं ऑफिस में था, मैं घर आ गया क्योंकि ये विन के ऊपर एक वीडियो बनना, मतलब हम दोनों का बात करना तो एक बनता था। जिनांश भी घर पर थे तो हमने सोचा कि let's do a video. Obviously we will do detailed analysis of the series. It's been 2-2. We have some questions for the Indian side as well, but just raw reaction. Jinanj, कैसा लग रहा है after seeing this match and this 1 hour of cricket? Was this 1 hour much wholesome than the entire series itself? Absolutely. Like today in the morning, I felt like, I mean, I even called you, like, there is like a slight chance at the back of the mind that we might pull this off. Hmm. And like the way Siraj bowled, like, I know Prasid started off with giving away 8 runs, and we were like, oh, it's gone down the drain because we won't be able to contain it and everything. But the way Siraj bowled those successive, I mean, the next spell, I mean, the next over which he bowled, when Siraj bowled that, it was like hitting the right lens, hitting, I mean, the ball was swinging for him. There was, I mean, for Prasid Krishna, for some reason, the ball wasn't swinging much, but Siraj was able to swing the ball away from the batsman. I mean, his Hmm. off cut, his leg cutters, everything were working today. And Hmm. it was like absolutely this ये जो 1 घंटा था जो फेस था वो it was much better than the whole series because it was nerve wracking like how um like at once like Gus Atkinson even slogged one for a six which was kind Yeah. of a, I wouldn't say it was a drop catch Yeah. of Akashdeep, but it was like if he would have stood a bit further back we could Hmm. have taken that catch and like the game was evenly in balance like it I mean, the target was really low, like it was just 17 runs were required towards the end, but it was a very big target considering Chris Woakes on the other end, who was not able to bat at all. But him coming to play was another like was a good thing. Like, but we have already seen Rishabh Pant also doing the same, so it was okay. But anyway, like it was a monumental effort from his end as well. But overall, India really played this game well. I won't say they played the game really well because at once the game Yeah. had gone away from us, but they bought back. They believed themselves, and Siraj mainly believed himself, and he was able to pull it off towards the end. Yeah. या आई थिंक जिस तरीके से हमने क्रिकेट खेला है ये या इंग्लैंड ने भी क्रिकेट खेला है ये सीरीज में, आई डोंट थिंक इट विल बी अनफेयर टू से दैट एनी टीम डिजर्व टू Yeah. लूज. बोथ द Hmm. टीम डिजर्व टू विन दिस सीरीज. आई मीन नॉट विन द सीरीज बट एटलीस्ट नॉट लूज They इट did फ्रॉम draw the हियर ऑन, series. Yeah. बिकॉज बिकॉज द अमेजिंग, आई मीन ये और मैनचेस्टर वाला मैच मैं बोलूंगा कि इंग्लैंड ने गवाया, और हमने पहले के दो मैचेस जो कि हेडिंगली और लॉर्ड्स वाला है जो हमने गवाया. Lots. तो ये मैच उनके पकड़ में था कल. 300 300 फॉर 3, दे वर क्रूजिंग आउट. जस्ट 74 मोर रन्स टू स्कोर टू one day and more than a session and a half remaining. Harry Brook in full song, Joe Root in full swing. Everything was going in their way, but somehow we managed to get Harry Brook, and then we opened the gates. As we say in cricket, हमेशा हम बोलते, we open the gates. That really opened the gates for India. And then the best batter for England this series, Jamie Smith also couldn't manage to get through the pressure of this morning, and he perished in the first over itself, where he faced our amazingly talented and lion-hearted Mohammad Siraj. Like it is one thing to have a skill, it is one thing to have execution, but it is a very different thing to give it all. जो हम बोलते हैं कि when you give it all, it's in this series many players came and gave their all. Be it Rishabh Pant coming out with a broken foot, be it Mohammad Siraj playing 5 test matches, only fast bowler to sustain the 5 matches.
going on in his 30th over for the fifth day of the last day of the tour, and going to get us three more wickets, which was most crucial in this series for deciding it. And then we saw a very, very heartwarming thing coming. Chris Woakes making his debut 12 years or 13 years back on the same ground, and on the same ground coming with a sling in his hand. It's not even that. हमने देखा है कि there was a finger injury to Graham Smith when he came out to bat. But his this was completely different. He had a sling. His hand was inside his sweater, and just I don't know how he would have played that. Even if उनको एक बॉल खेलना पड़ता तो कैसे खेलते वो तो पता नहीं. बट बीच में एक मोमेंट आया था जब सिराज के पहले सिराज ने जो ओवर में एक रन दिया था लेग बाय, उस ओवर में हमने बोला था कि लास्ट दो बॉल पे फील्ड ऊपर लानी चाहिए थी. बट शुभमन गिल ने ऊपर नहीं लाई. फिर ध्रुव जुरैल ने वो रन आउट मिस किया क्रिस वोक्स का. उनको बहुत पता नहीं बहुत सारी चीजें बोली गई. सब लोग ने बोला. बट क्या क्या सोच रही होगी? आपको लगता है कि क्यों वो फील्ड ऊपर नहीं लाए, और उनको क्या गस एटकिंसन को ही आउट करना था, उनका प्लान ये था, या रन आउट करवाना था? या हो सकता है कि वो लोग सोच रहे हो कि बिकॉज क्रिस वोक्स इज बैटिंग लाइक ऑलमोस्ट विदाउट अ बैट, तो उनको उनको बॉल नहीं करना था, ऐसी भी सोच रही होगी? क्या लग रहा है क्यों ऐसे किया इंडिया ने? आई थिंक बैक ऑफ द माइंड वो एक सोच रही होगी कि क्रिस वोक्स को, आई मीन मेरे को नहीं मालूम, जो हिसाब से उन लोग ने रिएक्ट किया उसके बाद जब रन हो गया, हम्म, तो मैंने मतलब मैं जब टीवी में देख रहा था, आई कुड लिप रीड सिराज सेइंग व्हेन, आई मीन स्पेशली व्हेन ध्रुव चुरेल मिस दैट रन आउट, आई कुड लिप रीड सिराज सेइंग दैट तू क्या उसको बोला नहीं कि क्या प्लान है? आई हम्म, थिंक देयर वाज अ प्लान काइंड ऑफ अ थिंग कि ऐसे ही बॉल डालेंगे एंड हम्म, जुरेल पकड़ के, आई मीन मार थ्रो दे. करेंगे या कोई भी थ्रो करेगा वहां पर स्टंप पर, तो हम्म, आउट हो जाएगा और मैच खत्म हो जाएगा वहां पर ही. बट हम्म, ये हुआ नहीं. हम्म, इनफैक्ट ध्रुव जुरैल के हाथ में ग्लव्स था ही और वो हिट नहीं ऐसे कर ही पाए. तो मारना चाहिए. आई थिंक किसी ने, शुभमन गिल या किसी ने आई थिंक कम्युनिकेट नहीं किया था हम्म, जुरैल को, या तो हम्म, कम्युनिकेट किया होगा और उन्होंने कैजुअली लिया होगा वो चीज. बट पर मेरे को लग रहा था कि कम्युनिकेट ही नहीं किया होगा ध्रुव जुरैल को, क्योंकि ध्रुव जुरैल ऐसे भी नहीं है कि वो इतने ओवर कॉन्फिडेंट अपने फर्स्ट ओवरसीज टेस्ट मैच में वो ऐसा कुछ कॉम्प्लेसेंट बिहेवियर रखेंगे. तो हम्म, मतलब it was an easy, like he should have he should have had the gloves off his hand and then collect the ball and just throw it straight away, but it didn't work. But anyway, that doesn't yeah, मैटर. yeah, सिराज ने भी एक कैच ड्रॉप किया था 6 पर, yeah, एंड वहां से मतलब गेम पूरा चेंज हो गया. इनफैक्ट सिराज ने भी वो खुद एक्नॉलेज भी किया अपने पोस्ट मैच हाँ. प्रेजेंटेशन में कि जब उनको प्लेयर ऑफ द मैच मिला, तो मतलब काफी इट्स फाइन, ये सब चीजें होती है. एक प्लान था एक वर्क में, इसके लिए उन्होंने मेनली शुभमन गिल ने फील्ड को स्प्रेड आउट कर दिया था. हाँ, मुझे तो लगता है, ये जहां तक मुझे लग रहा है कि द काइंड ऑफ रीडिंग आई हैव ऑफ शुभमन गिल, मुझे यही लग रहा है कि उन्होंने यही बात करी होगी कि हम फोर्सफुली वोक्स का विकेट लेकर मैच नहीं जीतेंगे. अगर हम उनको रन आउट कर पाते हैं तो ऑब्वियसली वी आर नॉट बॉलिंग एट हिम, वी आर रनिंग हिम आउट. सो दैट इज अनदर थिंग. तो वो एक होगा कि फील्ड पीछे रखेंगे, अगर वो रन आउट करते हो हम उसको रन आउट कर देंगे अगर मिस कर दिया तो. ये मुझे लगता है कि रैशनल हुआ होगा. बट हुआ नॉनदलेस होगा. गस एटकिंसन ही आउट हुए, क्रिस वोक्स आउट नहीं हुए, और उन्होंने बॉल भी नहीं खेली, तो दैट वाज अ वेरी गुड रिजल्ट फॉर बोथ द टीम्स. हम्म. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने मतलब ये पूरा वीडियो उनकी उनके बारे में ही बताया, बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने मुझे कॉल में एक मोमेंट में बोला ही लाइक you were very happy at that point when he took the wicket of Jamie Overton. Greatest of all time, better than Bumrah. Do you mean it? At once, yes, because considering this series, the way he has bowled, like bowling 1000 plus balls now, because he bowled in this day as well. So bowling 1000 plus balls, being the Mm, only bowler to continue playing yeah. 5 test matches. Mm, Even at Gaba, he played 5 test matches. He was not the one who went out. So, matlab, mm, everyone talks about workload management and everything, but no, I mean, about Bumrah, and mainly about Bumrah, but no one talks about Siraj. Siraj's workload management. Like Yeah. the way, I mean,
Many people wrote him off, especially after the Champions Trophy snub. He was Mm. not effective with this new ball. I mean, the old ball at the later part of the innings, and some of the things were true also. But even myself, I disregarded Mohammad Siraj being in the squad. That it's fine, he's not there in the squad. He was anyway not adding much value considering the pitch and everything. It was better not to keep him. But even the coach disregarded him in the Champions Trophy squad. So even the captain during that time. So Mm. coming back from that snub, playing in the IPL, that's fine. He didn't have such a. I mean, he had a good IPL, but not that great of an IPL Yeah. as well. So so that was the other thing. So I mean, coming back from those so many rejections and then giving your heart out in all of these five matches, all of Yeah. these five matches, he has been able to. He is your currently your highest wicket taker as well in this Yes. series. Yes. Yeah. Something you would expect Bumrah to be over there, but this time it was Siraj. So from only believing in Jassi Bhai to now saying only believe in I believe Myself. in myself, Yeah. he has come a long way Along in the, this. yes. सिराज के ऊपर So मैं एक yes, बहुत he is better than Bumrah. At the moment, yes, he is better than Bumrah. yeah If Bumrah is able to give 5 tests, then we'll see what happens. because in any sport from मतलब महाभारत के टाइम से वो एक आर्चरी का स्पोर्ट वो लोग खेले थे but any sport skill is another thing but giving everything in your dedication in is a separately that is what makes sport a sport so आप एक एक तरफ एक बॉलर है जो हाईली स्किलफुल है और he is the best bowler going around in the world cricket but decided to not play the most crucial match for whatever reasons but then there is another bowler who is playing all giving it all last ball tak, and to see India off to make sure that we don't lose it is something very special और हिंदी में एक चीज बोलूंगा बिकॉज हमारे देश में भाषा को लेके बहुत सारी चीजें बोली जाती है अभी कि कोई स्टेट्स में कुछ बोलना चाहिए किसी को हिंदी नहीं पसंद ये नहीं here is one player who doesn't speak the language English as profoundly as others do Yes. and most of the English media is a fan he's made all the English media his fan कल एक इंटरव्यू भी देखा हमने डीके के साथ वो बोल रहे थे डीके ने इंग्लिश में बोला because obviously he's covering for an English broadcasting channel but he tried to speak in English and then उनको नहीं जमा तो he started speaking in Hindi that is Mohammad Siraj for you that is the raw emotions he brings to the game and most of the English media में रेडियो पे सुना है मैंने YouTube पर देखा है and everyone is a fan of Mohammad Siraj knowing the fact that he doesn't speak their language as well so language is not a barrier in the world and that shouldn't be एक बहुत अच्छा मैच प्रसिद्ध कृष्णा के बारे में लास्ट नोट्स बोलूंगा मैं हमने बोला कि वो ऑफ कलर दिखते हैं कभी कभी बट ही हैज आल्सो पिक्ड 8 विकेट्स इन दिस मैच एज ही हैज डन और लास्ट एक क्रूशियल जो जॉस टंग का विकेट उन्होंने लिया अपनी तरफ से हम बोल रहे थे कि सिराज इज लुकिंग मोर पोर्टेंट बट प्रसिद्ध कृष्णा इज लीकिंग रन्स बट उनकी तरफ से उनके एंड से ज्यादा विकेट भी नहीं आई है जितने भी विकेट आई है मैच में वो even for England Siraj. it's come from the end where Siraj was bowling so Hmm. to hold one end Akashdeep bowled really bad yesterday I feel but Prasidh Krishna did step up and support Mohammad Siraj the way he needed it to be so all in all a very good team effort Karun Nair with that amazing 50 in the first inning we have a hit and a miss for his series, but we have this analytical discussion later. But this is all about the joy of Indian cricket and the joy of Test cricket. ऐसा आपको किसी भी और फॉर्मेट में ऐसा ड्रामा ऐसा थ्रिल नहीं मिलेगा सिर्फ टेस्ट क्रिकेट ही आपको ये थ्रिल दे सकता है सो more videos coming from us about the analysis of this series and also we'll sit down, we'll think together that we need to cover Asia Cup or we need to talk about it or not. That's a discussion we need to have. But we'll keep you posted on that. But for now, amazing win for India and a series drawn, which was completely on the cards. Last question for you, Jinansh. हैरी ब्रूक को मैन ऑफ द सीरीज चूज करना गौतम गंभीर क्या अपनी टीम के साथ साथ दूसरी टीम का भी सिलेक्शन गलती कर रहे हो क्या बोल सकते हो मतलब हैरी ब्रूक मतलब मैं सुना हैरी ब्रूक का नाम मैं बोला पहले तो मेरे को लगा कि ये लिटरली ये प्लेयर ऑफ द सीरीज इसको दे दिया है तो मैं सोचा कि कैसे ये मतलब हैरी ब्रूक का नाम आ गया इसमें मतलब और हमारे टीम ने कैसे मान भी लिया कि हैरी ब्रूक को देना पड़ेगा पर फिर बाद में यह अनाउंस हुआ कि ये कोचेस डिसाइड करते हैं तो मैं सोचा कि ये सिलेक्शन गंभीर ही कर सकता है लिटरली
जब उनको पूछा था कि रोनाल्डो और मेसी, उन्होंने सीधा बोल दिया था मार्कस रैशफोर्ड, जो ऑप्शन में भी नहीं थे। तो मतलब ये सब सिलेक्शंस ऐसे हैरी ब्रूक के वो ही कर सकते हैं, T20 माइंडसेट वाले कोच है वो, और वो आज एक नॉक के, उनका जो T20 जैसे एक नॉक था आज, वो हम्म, देखकर उन्होंने उन्होंने मतलब हैरी ब्रूक को दे दिया। तो ये अपना टीम सिलेक्शन माइंडसेट ही दिखाता है अपने को। और एब्सोल्युटली। लेट्स सी क्या होता है हम्म, फ्यूचर में। अभी मालूम नहीं क्या करेंगे, अभी हम लोग वीडियोस भी अभी नेक्स्ट एक मंथ Yes, एटलीस्ट, एशिया yes, कप तक तो एटलीस्ट 1 मंथ है, तो वी डोंट नो, बट yeah, लेट्स सी। yeah. या Yeah, that is for future videos. But obviously, we'll come up with another analytical video with Ishwar, the crazy guy, which we generally collab with. So do join us for that. Until then, let's take care. Bye bye.